Hello, good morning everyone. I welcome you all in this new video tutorial of your class 12th, and today I'm going to discuss 7.2. 7.2 is the second exercise of your integrals, I mean integral calculus, right? And it is given in your part 2 of your NCERT book. And today's topic is substitution method, right? Substitution method. Okay. तो अपन क्या देखने वाले हैं कि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे हमारे पास 7.1 में बिगिनिंग के 5 क्वेश्चंस जो हमको लग रहा था कि कैसे बनेगा तो हम उसको बनाएंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी नहीं किया था ओके सपोज आई हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस you have given the function sine 2x and you need to integrate it. So if I apply integration over here, so I'll do the same thing this side. Now I very well know that I know the formula for integration of sin x, which will give you minus of cos x plus of c. But what about 2x? Here in the formula, there is only x, but you can see here is 2x. तो जैसे अपन जब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो d by dx of sin 2x क्या होता था? ये होता था cos 2x. फिर हम चेन रूल यूज करते थे और इस 2x को एक बार और डिफरेंशिएट करते थे, राइट? और उसके बाद फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 आता था, तो ये आंसर आ जाता था 2 cos 2x. तो आपने देखा ये जो कांस्टेंट था हमारे पास में 2 के साथ में जो उसका कोफिशिएंट था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया आपके फाइनल फंक्शन के. तो या तो आप इसको ऐसे लर्न कर लीजिए दैट यहाँ पे तो ये होगा माइनस ऑफ cos 2x एंड यहाँ जो ये 2 है कोफिशिएंट ये ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रल इज नथिंग बट द एंटी डेरिवेटिव, राइट? तो जैसे यहाँ पे हो रहा है उसका ऑपोजिट यहाँ पे हो रहा है. ओके, बट इसके लिए जरूरी तो नहीं कि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही दिया हो. सपोज आपके पास में क्वेश्चन किसी और तरीके से दिया हुआ है. आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. सपोज देयर इज अ फंक्शन f(x) is equals to sin ax square plus of bx plus of c. अब तो क्वेश्चन डिफरेंट हो गया. अब क्या करेंगे? या फिर फंक्शन थोड़ा और चेंज करते हैं अपन. 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब क्या करेंगे? क्योंकि इन जो कुछ क्वेश्चंस हमको दिख रहे हैं भाई ये तो यहाँ पे डिफरेंट हो गया. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अब और ही अलग है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ u by v और अभी तक तो अपन ने 7.2 के लिए u by v का फॉर्मूला पढ़ा नहीं किया. एंड इनफैक्ट आपके इंटीग्रल में देयर इज अ नो फॉर्मूला फॉर u by v. आई मीन वन फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फंक्शन. ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ 7.2 का, वेयर विल यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. जैसे हम अपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करते थे टू डिफरेंशिएट योर फंक्शंस, राइट? टू डिफरेंशिएट एनी काइंड ऑफ फंक्शन, है ना? तो हम वहां पे क्या यूज करते थे? चेन रूल. एंड हियर इन 7.2 इन इंटीग्रल कैलकुलस वी विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर द सेम काइंड ऑफ फंक्शन, जहां पे आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है किसी दूसरे वेरिएबल में, and you'll see that the question will be easily integrable then. Okay, so let's discuss few questions. I'm taking 7.2 ka question. uh, you can check the sequence of this question. I'm just taking it. See, this is the integration. I need to do the integration of this function. I'm introducing the substitution method here. आपको क्या करना है? आपको लेट करना है इन दोनों में से किसी भी एक चीज को t के इक्वल. जैसे I'm letting it as 1 plus x square is equals to t. Why I'm letting it as 1 plus x square is equals to t? Because I know that if I'll do the differentiation of this function, 1 will give you 0 and x square will give you 2x and this will give you dt by dx. It means 2x into dx will give you dt. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ कि आपने कुछ लेट किया इसी फंक्शन का ही किसी एक पार्ट को एंड आफ्टर दैट यू परफॉर्म डिफरेंशिएशन. सो दिस कम्स अंडर द सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंटीग्रल कैलकुलस. दैट्स व्हाई आप सबसे पहले क्या यूज करते हो? सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? आप सबसे पहले पढ़ते हो आपका डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन. नाउ यू कैन सी गाइस देन इन द प्लेस of 2x into dx I can substitute it with the dt and I have taken 1 plus x square as t. So just do that integration. In place of 2x dx I am writing dt and in place of 1 plus x square I am writing t. Now tell me ये किसका फॉर्मूला है? ये बहुत ध्यान से देखिए. इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड इट इज नथिंग बट log x plus of c. अगर अपन यहाँ पे मॉड लगाएंगे तो ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा. वाई सो?
हमको पता है log के अंदर में जो x होता है it is always positive, that's why we are taking the modulus sign. So my answer will be like this, log of t plus c. Okay, but आपको यहीं पे आंसर नहीं लिख देना है. You need to substitute the value whatever you have taken. What you have taken, you have taken 1 plus x square st. So this will be log, and this is 1 plus x square and plus of c. So this is my answer. Okay, do not forget to substitute the value of t, because your question is not in the form of t, it is in the form of x, right? So you have to write your answer in the form of x. Let's do the another question for the same method. See, this is the basic method जो आपको throughout integration काम आएगा. तो आप लोग को जितने भी questions दिए सबकी practice लगानी है. And one most important thing is आपको ये सोचना पड़ेगा question देके कि भाई मैं किसको t रखूं. ये जो small t मैं put कर रही हूँ ना, किसको put करूं. ठीक है, तो ये अचानक से नहीं आएगा. It will come after your practice. Okay, let's have another question. It is 1 upon x plus x log x and dx. I need to integrate this function. And in 7.1, I have seen that there is no, formula which can, simplify this function. So what I'm using substitution method. So guys, let's just do one step more. 1 upon, take x as common, it is 1 plus log x, and then dx. Now see, if I'll take 1 plus log x is equals to t, and if I'll differentiate it, it will give you 1 by x, right? That's why I'm taking it as let 1 plus log x is equals to t. Okay, उसके बाद मैं ना डायरेक्टली हमेशा आप लोग के लिए ये वाला स्टेप लिखा करूंगी. ठीक है, तो आप देखिए, if I'll differentiate it, 1 will give you 0 and log x will give you 1 by x, एंड dx में हमेशा यहाँ पे रखूंगी, और dt. और ये dx कहाँ से आया, आपने देखा कि ये वाला dx था जो मैं हमेशा लेफ्ट साइड में करके लिखती हूँ. सो इट इज 1 by x dx and यहाँ के dt. So guys, you can see that you have 1 by x and dx, right? So in place of that, I'm writing dt and it is t. Again, you're getting your answer in form of log, in the form of log, and just substitute the value of t. It is 1 plus log x plus of c, and this is my answer. Get it? So I hope gradually you're understanding the method. ठीक है, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे आपको इस वीडियो में जितनी क्लैरिटी मिलती है बहुत अच्छा है. बट ट्राई टू do the examples of every exercise of this integral calculus. Okay, if you'll do the example, if you'll do all the questions in your copy, there's no need to prefer another book for this particular chapter. Okay, now let's have another question. I'm taking question number 3. Just take a screenshot or just do the solution in your copy and kindly comment if you have any doubt. So I'm taking one more question, and here I have a trigonometric function with another trigonometric function, and I very well know that I do not have any formula for multiplication of two functions. So I'm using the substitution method. Let दो तरीके हैं, एक तरीका यूज करते हैं, अगर हमको लगा कि उससे कुछ बात नहीं बन रही है तो विल यूज अनदर थिंग. तो पहले मेरे को लग रहा है ना, बिफोर लेटिंग इट समथिंग, मैं इसको क्या कर सकती हूँ ना, कुछ सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन में क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है उसको सोचते हैं. देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि देयर इज साइन ए एंड कॉस ए, राइट? बिकॉज दोनों के पास में जो ए एक्स प्लस बी है वो सेम टू सेम है ना. तो आपने क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विच इज द फॉर्मूला फॉर 2 sin a cos b और 2 sin a cos a. ठीक है, तो हमको पता है दैट sin 2a is equals to 2 sin a cos a. Oh, nice. If I want to take this 2 in the denominator of sin 2a, so this will be like this, and it is sin a into cos a. Oh, now the question becomes very easy. So it is not a substitution. Okay, I'm rearranging the function, so I can write it as 1 by 2. यहाँ पे मतलब 2 मैंने multiply किया और 2 divide कर दिया, so it will look like this. And just use the formula which I have put it in the step, right? So it will become 2 sin a cos a, so it will be sin 2a, है ना. ये कितना हो जाएगा आपका sin 2a. So this is nothing but sin 2a. Okay, now the thing is I do not know the formula of sin 2ax plus b.
Just do one more step. Sine 2ax plus of 2b. Now just substitute the value. Let, मेरे को इससे ही प्रॉब्लम है ना, और तो कुछ है ही नहीं फंक्शन में, तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने उतनी वैल्यू को टी पुट कर दिया. ओके, नाउ यू कैन सी इट विल गिव यू 2a एंड ये तो 0 हो गया dt by dx, तो उसका dx मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और ये dt. ओह नाइस. अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आप बोलोगे मैम अभी तक तो आपके पास सारी चीजें थी बट यहाँ पे तो 2a है ही नहीं, तो एक काम करते हैं ना, इस dx को यहीं पे रहने देते हैं और dt के अपॉन में 2a लिख देते हैं. बस आपको कोई x यहाँ पे मत दिखे, है ना. तो मैंने देखा कि इन प्लेस ऑफ dx आई कैन राइट dt by 2a. 2a तो कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, मैंने सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे एंड इसको रीराइट किया फंक्शन को. देखिए, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 1/2 था, ये हो गया आपका साइन ऑफ टी एंड इन प्लेस ऑफ dx आई एम राइटिंग dt by 2a. ओके, जस्ट टेक योर 2a कॉमन, ये 1/4a हो गया, ये हो गया आपका साइन टी और ये हो गया dt. सो इट बिकम्स 1/4a एंड इट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ t प्लस ऑफ c. ओके, तो क्या ये मेरा आंसर है, क्या ये मेरा आंसर है? नहीं ना भाई, अभी आपका आंसर कैसे हो गया, आपको टी को तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना. तो अपन ने क्या किया, माइनस ऑफ 1/4a and it is cos, it is 2ax plus of 2b plus of c, and this is my answer. So this is the third question of your substitution method, and let's have one more question. See, I have taken a few variety of questions. In question number 1, I have discussed algebraic function. In question number 2, I have discussed logarithmic function. In question number 3, I have discussed your sine and cos function. And let's have one more question, which is given in the form of, root. So it is given as 4x plus of 2, and it is under root of x square plus x plus 1. Now the question becomes more difficult. Why? Because you can see that there's an algebraic function and there's an under root function, and both are in multiplication. But we do not have any formula for multiplication. So what we need to do? First, simplify this function. I can take 2 common from the first bracket, so it becomes 2x plus 1. And then there is x square plus x plus 1. Now you can see that the function inside this under root, I can take it as t. Why? Because if I differentiate, it will be like this. Okay, so just do that. Let x square plus x plus 1 is equals to t. So it becomes 2x plus 1 after differentiation, and dx को मैं हमेशा यहाँ पे लिखती हूँ, dt यहाँ पे. So guys, you can see that you have 2x plus 1 plus of dx in your integral function. Okay, so just rewrite the whole function. I'm writing 2 in front of your integral sign, and this will become under root of t, and this is dt. Why so? Because you have taken this as t, and you can see that यहाँ पे under root लगा हुआ था, तो ये मैंने t लिखा और t के पास में क्या लिख दिया, under root लिख दिया. One more step I want to write, I can write it as t to the power half, and it is dt, right? So this is something like x to the power n dx. What was the formula? The formula was x to the power n plus 1 upon n plus 1. So just do that. It is 2. It will be 1/2 plus of 1. It is 1/2 plus of 1 plus of c. So guys, this becomes t to the power 3/2, and it is also 3/2 plus of c. So it is nothing but 4/3 that this comes up, and this is t to the power 3/2 plus of c. So what was the value of for your t? X square plus x plus 1. Just substitute that. 4/3, and this will be x square plus x plus 1 to the power 3/2 and plus of c, and this is my answer, right? So in this way, right, you can use your substitution method to solve any kind of question, and this method is very much important. Or you can you can see this method in everywhere of your integral problem, because we have limited number of formulas, right? And बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूला से आपका बात नहीं बनेगा. तो 7 पॉइंट मैंने बोला था, 7.2 7.3 पढ़ते जाएंगे, and you'll get more clarity about your chapter. Okay, so this is all about today's video, and go to your book and solve more questions, and please comment me if you have any doubt, right? So thanks for watching this video, guys, and we'll meet in the next lecture with the 7.3, and that is I guess trigonometric substitution. Okay, so thank you for watching.